Hello guys, I'm Sumit Nahak. I was teaching you rotational motion. I already had taken 2 sessions. This is going to be our third session. So let's start. वो first lecture first और second lecture है. आप ऊपर lecture center of mass में पढ़ ले, vector product पढ़ ले, motion of center of mass पढ़ ले. वो last lecture में कोई हमें continue करिए angular velocity and its relation with linear velocity. So let's start with angular velocity today. Okay? Angular velocity and its relation with linear velocity. Okay? So, for example, more object near chili. It has more axis. The axis around the rotation motion. It has more object. Okay? For example, object. So, more the particle near particle P1. Okay? J की axis to radius R रची और ये rotate करची circular motion. Okay? Circular motion में rotate करची around the axis PQ. Okay? So हम ये relation करेंगे. Okay? तो सबसे हमें जानते first में linear velocity तो जानते kinematics का पढ़ती linear velocity formula का displacement upon time. Okay? By S by T. Okay? So एटी मात्र particle P1 rotational motion को तो जेतବେଳେ से linear velocity करे से कौन कर आगू बढ़े but rotational motion से कौन करे circle around पड़छी तो circle around कल कौन तार change in angle होबो थीटा तो जेतବେଳେ जे rotational motion पड़छी particle ला P1 रो P2 को position ये particle ला A position रो A position को बढ़ो position A to position B okay angular motion को तो हमो एडी कौन करे अछि angular velocity करे तो जदि मैं angular velocity को ओमेगा रे डिनोट करछि ओमेगा रे मीनिंग है angular velocity जदि मैं angular velocity को ओमेगा रे डिनोट करछि तो तार angular velocity केता हो change in angle divided by time तो angular velocity रो वैल्यू केता हो change in angle माने से केते angle ट्रैवल करछि केते टाइम ओके चला जरा angular velocity तो मते में कोन करे अछि linear velocity जो v और ओमेगा रो relation ये ओमेगा रिलेशन हम समझ जानि छ मतलब v इक्वल टू ओमेगा बट एडो केमिति डिराइव कराला उसे हम देखो चाहूँ ओके linear velocity फॉर्मूला जाला angular velocity मीनिंग जाला angular velocity माने केते एंगल से चेंज करछि टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चलो व्हाट्स द angular velocity तो वो इधर रिलेशन अब हम डिराइव करेगा सिखो ओके तो सीए t टाइम रे थीटा एंगल मूव करला जदि मो कोई गोटे स्मॉल टाइम dt माने स्मॉल टाइम माने near to 0.001 second small and time रे से केते मूव करथि जदि मो मन कर से एंगल को नहीं d थीटा ओके व्हाट इज स्मॉल एंगल मूव करथि ओके अछि d थीटा रे को मो एडी मैग्निफाई करी देखो छी एटा को एडी मैग्निफाई करी देखो छी मो d थीटा r ओके तो एबे देखो हमें सब बेले जानछनी आउट फॉर्मूला तो मो मन रखिया अछि angle is equal to r upon radius okay angle is equal to r upon radius तो एडी एंगल मन करो स्मॉल एंगल होची d थीटा इट सब स्मॉल एंगल पर एप्लीकेबल ओके एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल एंगल ओके तो स्मॉल एंगल होची d थीटा तो तार r पे एड केता हो सो स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल कर तो एडा r ना होई उडा स्ट्रेट लाइन कंसीडर करा तो मेरे बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रैवल कर से केवल r की पेरिन तो इज स्मॉल डिस्टेंस होगा तो स्मॉल डिस्टेंस को मैं करूं ds में ds डिवाइडेड बाय रेडियस ओके d थीटा इनटू ds को मैं कौन लिख परिबी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम तो v dt में लिख परिबी डिवाइडेड बाय r ओके तो d थीटा को मैं पढ़ांची d थीटा बाय dt इज इक्वल टू v बाय r d थीटा बाय dt कौन हो गई एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा बाय टाइम जदि गोटे स्मॉल एंगल ट्रैवल कर d थीटा बाय dt ने लिख पारे ना और d थीटा बाय dt इक्वल टू कौन जीवो ओमेगा ओमेगा इक्वल टू v बाय r तो v इज इक्वल टू ओमेगा ओके तर रिलेशन हो बसला तो एडा सब मैग्नीट्यूड पाए ओके सब मन रखो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी जहां भी है इसको वेक्टर क्वांटिटी तो तार हम मैग्नीट्यूड काट देले
तार डायरेक्शन में हम कौन करिया v वेक्टर v is equal to omega क्रॉस प्रोडक्ट r डायरेक्शन केमि करिया मु तो म पूर्व लेक्चर रे कहितली पूर्व लेक्चर कौन कहितली गोटे वेक्टर प्रोडक्ट जदि हम को दीटा आतर करछ दीटा वेक्टर तार हम डायरेक्शन केमि ऐड करबे दीटा रो तुम कहितली गोटे राइट हैंड थंबल और प्लस स्क्वायर रूट ओके स्क्वायर रूल रेडी कौन केमि करबे हमको गोटे ऑब्जेक्ट रो और एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन जणा अछि और रेडियस जणा अछि तार वेलोसिटी केमि करिया ओके तो एटा को तमे 3D रे इमेजिन करो ए ऑब्जेक्ट 3D रे इमेजिन करो एटा होछ मतलब z एक्सिस रे z एक्सिस अराउंड रे एंगुलर वेलोसिटी कोछ ओके तो तार एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन को डायरेक्शन हबो तार एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन हबो z एक्सिस के ओके तो जदि मु z एक्सिस तार एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन और रेडियस डायरेक्शन को पड़ा छी x एक्सिस रे और एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन को एक्सिस अछि z एक्सिस रे का अछि एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन x एक्सिस रे अछि रेडियस डायरेक्शन तो हमो काढिया अछि वेलोसिटी डायरेक्शन ना कोन डायरेक्शन में होबो किमि काढिया हम सब जगह फिंगर को पॉइंट करो एंगुलर वेलोसिटी रे आउ हाथ को मूव करो रेडियस डायरेक्शन तो थंब में कोपड़ पॉइंट करियो y एक्सिस ओके ना तो मेडा किमि काढि परियो जदि एंगुलर वेलोसिटी अछि a कैप रे क्रॉस r टा अछि i कैप रे तो k कैप रे i कैप मूव होय मालूम अछि क्रॉस प्रोडक्ट रे j कैप पर y एक्सिस जदि angular velocity is in the direction of z axis r is in the direction of x axis so velocity will be in the direction of y axis okay तीनरा सबले तीनरा perpendicular होगा so मु तुमको velocity कहली angular velocity कहली और समान दिजन सहित रिलेशन कहली मझे मोड छोटे से तुम कहय बुलिले जेतरा मु तुमको कहथि जोडे से स्मॉल टाइम रे से केते बोले से स्मॉल टाइम रे केते एंगल ट्रैवल करछ स्मॉल टाइम रे से केते एंगल ट्रैवल करछ तो स्मॉल टाइम रे से d थीटा एंगल ट्रैवल करतला जैसे स्मॉल टाइम रे से d थीटा एंगल ट्रैवल करतला जैसे स्मॉल टाइम रे हम तार जे एंगुलर वेलोसिटी काढे केता छ d थीटा बाय dt एटा को बाजे तार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कोन भाई से इंस्टेंट तार वेलोसिटी केता तो मेरे से इंस्टेंट आउट जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस सेटा को हम कांस्टेंट ही मानि पाइले सेति भाई सेटा को बाजे तार इंस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू d थीटा बाय dt okay what small time is getting allowed but that's the instantaneous velocity तो बुक लेके दोची instantaneous angular velocity सारी instantaneous angular velocity okay instantaneous angular velocity is सब गोटे small time instantaneous angular velocity is equal to d theta by dt okay मु तम रिलेशन कर देली v equal to omega r ns ला अदर डायरेक्शन की गाइडेंस के देली एबे मु तम आउट एग्जांपल थ्रू तो मोडे बड़े इसी देखा जाते जो में जो r टे नो चली रेडियस टा तेरे सब बेले परपेंडिकुलर डिस्टेंसिंग अब कोन पई बट फॉर एग्जांपल तमड आउट एक्सिस नो चली आउट ऑब्जेक्ट ड्रॉप करछ एटा होछ मनर एक्सिस ए पार्टिकल मनर मूव पेज मु इडो आर्बिट्ररी पॉइंट ओ नेली जा अराउंड दिस ऑब्जेक्ट मूव करछ ओके जा अराउंड ऑब्जेक्ट मूव करछ तो हमें भी कौन जानते v is equal to omega r v equal to omega r okay v is equal to omega तो मैं कौन लिख परिबी omega into arbitrary point o नेथिली तो op okay तापरे तमु गुटे वेक्टर प्रोडक्ट रे तमु आईडिया अछि एडी तो तमु कोन जणा पड़छि op vector is equal to the sum of the two vectors oc plus op जदि एपड़े नोटिस करो जदि एटा होच मोर वेक्टर ओपी एटा सब बेले ओसी और ओपी वेक्टर रो सम हो कोन भाई जदि मु सीपी वेक्टर का एडू स्मॉल लेटर कली एटा होच मोर सीपी वेक्टर ओके और ओसी वेक्टर को एपड़ नहीं जॉइन करली अंतर जो वेक्टर सम आछो को डायरेक्शन आछो ए डायरेक्शन आछो और ओपी टा डायरेक्शन अच्छा नहीं ए वेक्टर टा को एडी देखो और एटा को एडी नहीं देखो ओके तो ओसी और ओपी रो सम ओसी और ओपी रो सम ना ओसी और सीपी रो सम ओपी डायरेक्शन हो जाने तो एदी रो तारो वेक्टर सम तो हम ओपी वेक्टर को कौन लिख पाएंगे ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट ओपी इज इक्वल टू ओसी प्लस ओपी ओके ओसी प्लस ओपी ओसी रो छि कोन हमर रेडियस तो हम आर लिख पाएंगे
ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଲ ଫଲୋ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଓକେ ଏଠି ତମେ ଦେଖିବ ଓସି ଟା ଓମେଗା ର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି ଓସି ମାନେ କଣ z axis ଓସି ଟା କୋ axis ଅଛି ଓସି ବି z axis ओमेगा भी z axis ସବୁବେଳେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଦିଟା କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରେ ଯଦି ଏରିଆରେ ଆମେ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ଦେଖ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଲେ କଣ ହବ ଓସି sin थीटा ଆଉ ଏଠି थीटा ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 0 ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ 0 ଏଟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲା 0 ତ v equal to omega into op omega into op okay omega into op so sorry OP equal to OC plus CP. So just instead CP. So V equal to omega into CP. Okay. अब CP टा कौन दिला? Perpendicular distance. CP टा कौन दिला? Perpendicular distance. तो सब यार meaning करा V equal to omega cross the perpendicular distance of the point from the axis. Okay. सब यार कौन से arbitrary point है जो तार distance जहाँ भी हो, ए distance हमें कैपिटल एडी ना बने, ए distance से कैपिटल एडी बने. सब यार perpendicular distance. तार derivation को तुम देखते हो. Okay, so what is perpendicular distance from the axis. Okay, तो तुम angular velocity का concept बुझा पड़ा था relation बुझा पड़ा कि मेरी perpendicular distance था सब बोले axis का perpendicular distance तब मैं next में कोई भी angular acceleration का principle. What is angular acceleration? सब बोले try करो translational motion और rotational motion को ऐसे together लिखना होगा. Translational motion is कौन दिला? A is equal to V by T. तो ये angular acceleration को alpha जो दिया मैंने लगा, ये कौन है? V जगह आ रहा है कौन है? ले लो कौन? Omega by T. Angular acceleration is equal to omega upon T. Since we have small time with small velocity, alpha is equal to d omega by T. Okay. So angular acceleration is also a vector quantity. Okay. So angular velocity, linear velocity, everything पढ़ले, तारे में पढ़ले angular acceleration. तारे में next में तुमको पढ़ेगी torque. Torque इसके में तुमको basic idea introduction में दे सकती है. तो आज में तुमको short में टिकट revision करेंगे पढ़ेंगे. Okay. तो next topic को आगे जाएगा torque. Torque में कौन? जेमिति force in translational motion रे जेमिति torque same in rotational motion. Okay, so torque का actual definition कौन? Produces or gives an angular acceleration to a rotating body. For example, if an object अछि, ए ऑब्जेक्ट को जब हमें टॉर्क दबा तो से एंगुलर एक्सेलरेशन में से मूव करिवो. ओके, तो टॉर्क हम जो डिफाइन करछनी टॉर्क का फार्मूला कोन? फोर्स अपन किसी भी फोर्स को जाने फोर्स इनटू perpendicular distance from the axis. And so torque is equal to r perpendicular cross force. Okay, तो तारो ऐसे यूनिट कौन होगा टॉर्क का? न्यूटन मीटर. ऐसे यूनिट न्यूटन मीटर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये तो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हो जाओगी. टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r and f. तो r f sin theta. Okay, तापर एटा डायरेक्शन एटा होचे मैग्नीट्यूड पाई. सबोले मन रखो वेक्टर प्रोडक्ट जेतबेले काटो तार मैग्नीट्यूड करे तब तार डायरेक्शन करे. तो सबोले धीरे देखो together लिखो सबोले. ओके, तार मैग्नीट्यूड करा तापर तार डायरेक्शन केमि जाइना जदी एटा होचे ऑब्जेक्ट को जदी हम फोर्स सेपरेट दोछन ए डायरेक्शन में फोर्स दोछन तार r होचे ए डायरेक्शन तो तार टॉर्क से कोन डायरेक्शन में प्रोड्यूस करिवो कोन डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करिवो r को r क्रॉस f. तो r को हमें r ऊपर जदी हम हाथ रखिया r ऊपर जदी हाथ रखिया f पर हाथ मूव करो तो टॉर्क को डायरेक्शन प्रोड्यूस करो z एक्सिस. तो if r is in the direction of x axis, f is in the direction of y axis. So एटा टॉर्क को किस प्रोड्यूस होगा z एक्सिस. ओके,
एटा सब तबे राइट हैंड थंब रूल रे आपकी कैटेगरी डायरेक्शन या फिर स्पीड रूल दीटा रो तुम कहते स्पीड को मूव करियो स्पीड के मूव करियो आर रे रखी की एफ रो जो डायरेक्शन सेपरेट मूव करियो जल्दी से ऊपर आसकी तो प्लस है जल्दी से भीतर जाउची इनवर्ड जाउची स्पीड तो सेटा माइनस है ओके तो ओके अब ये जो एफ आर sin थीटा रो डेरिवेशन के लिए तो देखियो तो जो शॉर्ट डेरिवेशन है था जल्दी चेड़ा ऑब्जेक्ट अच्छी है आर डिस्टेंस हम फोर्स टा एप्लाई देली सबल मन रखा टॉर्क टा प्रोड्यूस करिया पे जो फोर्स टा परपेंडिकुलरली पड़तो ऑब्जेक्ट को से डायरेक्शन रे जो परपेंडिकुलर फोर्स टा दिबो से ही रिस्पांसिबल सबल टॉर्क प्रोड्यूस करिया ओके ऑलवेज अ परपेंडिकुलर फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क तो एफ डायरेक्शन अछि बट पूरा तो कंपोनेंट तो केवल परपेंडिकुलर पूरा ये जो एफ रो सबले फोर्स टा मोनी टॉर्क पर दोनी टॉर्क खाली कौन कोड़ा दोची जोड़ा की परपेंडिकुलर थो तो परपेंडिकुलर फोर्स आ केते एफ sin थीटा ଆଉ କିଛି फोर्स ଅଛି cos थीटा तो एफ cos थीटा टा केबे हम टॉर्क दोची ना खाली एफ sin थीटा टा दोची तो टॉर्क इक्वल टू कौन फोर्स दिला एफ sin थीटा इनटू आर ओके तो जदी एडी କିଛି ଗୋଟେ स्पेशल केसेस नबा जदी थीटा इक्वल टू 0 जदी थीटा इक्वल टू 0 ताले टॉर्क रो वैल्यू केते हो sin थीटा इक्वल टू 0 आर मीनिंग कौन जदी ଗୋଟେ ऑब्जेक्ट अछि ऑब्जेक्ट को जदी हमें ए डायरेक्शन रे फोर्स दबा एपर टार डायरेक्शन ए डायरेक्शन को दबा तो टॉर्क सबले 0 ऑब्वियसली किछ मूव करि परियन सेकंड केस रे जदी मो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लीजियो ऑब्जेक्ट एठी अछि ए डायरेक्शन सम 90 डिग्री पड़ दो तो टॉर्क कोन हो sin 90 रो वैल्यू कोन 1 तो टॉर्क इज मैक्सिमम थर्ड केस रे जदी एडा ऑब्जेक्ट आर जदी मैं फोर्स 80 देबी हो तो टॉर्क होला मनकर टॉर्क 1 जदी एडी फोर्स देली टॉर्क मनकर पड़े 2 तार वैल्यू बड़ा हो जदी आर बड़ा सो इफ तो हमर डिस्टेंस जते एक्सिस रो बढ़ुचे डिस्टेंस इंक्रीजेस टॉर्क इंक्रीजेस ओके तो डिस्टेंस जते पॉइंट रो बढ़ जीवो टॉर्क तो बढ़ जीवो जते तमरो कबाट निजो फॉर एग्जांपल डोर टा को तमे तो ए पार्ट में adjacent to तर एक्सिस जो एक्सिस रोटेट करे से एक्सिस पाखो बदल दे बोला है कि डिफिकल्ट हो गया को मेरा अधिक फोर्स दरकार हबो बट को तो हम एज जो बोले उठा है इजीली बोलियो कम पे फोर्स एटी कम दरकार ओके तो टॉर्क मो एती आज टॉर्क पिछा पड़ा तो ओके हम देख दोची स्पेशल केसेस टिकेट बुक तमे देखिबो स्पेशल केस मेंशन कराइछ टॉर्क चला परे बे मु तुमको नेक्स्ट मु तुमको पढ़ेबी एंगुलर मोमेंटम ओके तो एंगुलर मोमेंटम पढ़िया टॉर्क चला बे पढ़िबा एंगुलर मोमेंटम एटा को बितना से ट्राई कर कोन करे पे रिलेशन का ट्रांसलेशनल होता मोशन ट्रांसलेशनल मोशन रे लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू कोन mv तो एटी एंगुलर मोशन रे खाली हमें r में मल्टीप्लाई कर दो p into r बा mvr ओके तो जेमिति लीनियर मोमेंटम कोन सिग्निफाई करतिला माने ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम कोन सिग्निफाई करतिला सब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी रहउची सब्जेक्ट रो वेलोसिटी कितना चेंज होची सेम सिंगल रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कोन सिग्निफाई करे तारो जो एंगुलर वेलोसिटी से कितना चेंज होची एंगुलर वेलोसिटी बढ़ुची कि कमुची कितना चेंज होची एटा को ही एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करूची ओके तो जेमिति एंगुलर मोमेंटम को मो वेक्टर फॉर्म में लिखो तो लेट्स r क्रॉस इन वेक्टर फॉर्म ओके r क्रॉस p ओके तो एबे जेमिति मो तुम टॉर्क पढ़ला पहले सब बेले गुटे ऑब्जेक्ट को कितनी टॉर्क मिलो ताहा पे डिपेंड करे जो फोर्स टा बोर्ड जिसके कितने परपेंडिकुलर फोर्स को ता पे डिपेंड करे सेम सेमिति एंगुलर मोमेंटम कालाडो जो तार एंगुलर मोमेंटम आसी से था पे डिपेंड करछे केति की तार जो वेलोसिटी आसी से वेलोसिटी परपेंडिकुलरली तार वेलोसिटी केते आसी ता पे डिपेंड करछे फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट r जो वेलोसिटी मूव करछी v ओके तो तार जो वेलोसिटी आसी से परपेंडिकुलरली वेलोसिटी v sin थीटा तो तार मोमेंटम केते आसी एंगुलर मोमेंटम केते आसीबो m v sin थीटा into r ओके तो m v sin थीटा में कौन पहले
तार वेलोसिटी से परपेंडिकुलर वेलोसिटी कहते ता ऊपर डिपेंड करছে एंगुलर मोमेंटम जो v cos थीटा सेटा से आ डायरेक्शन अछि तो आ ऊपर डिपेंड करे एंगुलर मोमेंटम ओनली v sin थीटा ऊपर डिपेंड करे सेति भाई l इज इक्वल टू m dr sin थीटा एटा अछि मैग्नीट्यूड आउटर पॉइंट डायरेक्शन में आसला डायरेक्शन में कोन कहथि आउटर राइट हैंड थंब रूल यूज करबो इधर और टॉर्क स्क्रू ओके तो इधर कंप्यूटर रूल यूज करके हमें एल रो भी डायरेक्शन स्टडी करे एंगुलर मोमेंटम ऊपर से दिया दिनचा बेसिक्स नहीं फाइनली फार्मूला मन रखछ l r क्रॉस p और I mv sin थीटा मैग्नीट्यूड में टॉर्क तो मु कहली टॉर्क एंगुलर मोमेंटम आउ गोटे जिंस तो मु पढियो चाहछि वर्क डन ऑफ द टॉर्क वर्क डन बाय द टॉर्क एटा तुमु केतना न्यूमेरिकल सॉल्व करे हेल्प करियो बुक एते मन से देनी बट तुमु न्यूमेरिकल सॉल्व करे हेल्प करियो एटा तुम वर्क डन बाय टॉर्क वर्क डन रो फार्मूला में कोन पढती है ट्रांसलेशनल मोशन रे f into dt ओके f into dt sorry हां force into displacement force into displacement एटा होचे वर्क डन इन ट्रांसलेशनल मोशन ओके जेता हम टॉर्क पके जदि से ଗୋଟେ स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल कर there is a small distance travel also in time dt ଗୋଟେ small time रे object केते एंगल ट्रैवल करा d थीटा जदि बोले ଗୋଟେ small time रे जदि ଗୋଟେ टॉर्क अप्लाई कला पर टॉर्क मनकर जदि ଗୋଟେ फोर्स कला पर रोटेशनल मोशन रे जदि d थीटा एंगल ट्रैवल करते d थीटा एंगल ट्रैवल करिछ तो हम एडी कोन जानछन d थीटा रो वैल्यू कोन ds by dr ds by r sorry ds by r जानछन तो ds रो वैल्यू तो d थीटा into r तो एटा को जदि मैं एडी अप्लाई करी तो वर्क डन बाय टॉर्क कैसे होला f r d थीटा ओके एटा सब मन रखियो सेम सेमली पावर प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क तो मु ट्रांसलेशनल मोशन में कहथि पावर इक्वल टू कोन वर्क डन बाय टाइम ओके एडी हम वर्क डन रो वैल्यू दी वर्क डन बाय टॉर्क रो वैल्यू जानि सकछन कोन f r d थीटा तो पावर का एरिया पे मु दीटा जाय को rt रे डिवाइड कर दउ divide both by dt okay work done by time sorry r d theta by t work done by time equal to कौन चला पावर तापर d theta by dt इक्वल हमें कौन जानते एंगुलर वेलोसिटी मन पड़ला एंगुलर वेलोसिटी को f r into angular velocity equal to power ओके तो रोटेशनल मोशन रे पावर ऑफ फार्मूला होचे f r थीटा और रोटेशनल मोशन रे वर्क डन रो फार्मूला होचे f r d थीटा एदी होची जनरल नॉलेज कि तमो मन रखा कथा ओके टॉर्क पड़ले एंगुलर मोमेंटम पड़ले वर्क डन बाय टॉर्क पावर बाय टॉर्क जेता मैं पर ग्रेजुअली किसी न्यूमेरिकल सॉल्व करिया ता सहित तमरो कांसेप्ट क्लियर ही छिबो बट मु तमडी न्यूमेरिकल सॉल्व करूची find the torque of a force relation 7 I get plus 3 j get minus 5 k get position vector I get minus j get plus k get तो torque करे पे कोई एग्जांपल नंबर 65 ओके torque करे पे तुम कोई torque का फार्मूला कौन r cross f केवल f cross r करेंगे f cross r and r cross f are two different things okay so r cross f so essentially the angular momentum equal to r cross p not p cross r these are two different things okay r cross f r कहते हैं I minus j cap plus k cap cross 7 I cap plus 3 j cap minus 5 k cap
तो तमु एटा मो वेक्टर प्रोडक्ट रे गोटे शॉर्ट ट्रिक कहया भूली एति एबे मु कहि दोछि केमि करिया पे जेतल वेक्टर प्रोडक्ट करियो तीनटा जाक ऊपर लेखो आई कैप जे कैप आई रे कोन दीटा वैल्यू 1 7 0 -1 +3 k रे +1 -5 आ ऊपर साइन दबो आई पाखरे प्लस दबो माने मो शॉर्ट ट्रिक कोछि केमि तर वेक्टर प्रोडक्ट इजीली जल्दी कर पर माने सब जाक मल्टीप्लाई करी लेखा आडू बहुत ही ज्यादा टाइम लागे ओके जे कैप माइनस के कैप प्लस ओके तो आई पाखरे फर्स्ट आई लिखि दबो तापरे कोन करियो आई पाखरे जो दीटा जिंस अछि ए दीटा जिंस को भूली जाओ एति की जिंस को भूली जाओ एति जिंस भूली जाओ तो तमरे कोन रहला -1 1 3 -1 ए दीटा को क्रॉस प्रोडक्ट करियो ए दीटा रो क्रॉस प्रोडक्ट करो क्रॉस प्रोडक्ट -1 * -5 = 5 माइनस ताकू माइनस केते करियो 3 * 1 3 * 1 ने 3 ओके माते जोडा लेखा दे लेखि होछि ओके 3 तापरे जे के ऊपर कोन अछि माइनस चिन्ह अछि तड़ी माइनस चिन्ह दे दो देखि जे के लिख दो तापरे बे जे पाखरे जो दिरा जिंस से जिंस बोल एबे ए दीटा को क्रॉस प्रोडक्ट कर ए दीटा क्रॉस प्रोडक्ट कर 1 * -5 केते -5 -7 * 1 केते हो -7 ओके तो आउ थोड़ा लिख दो तमु इजीली बुझा पे मु लिखु छी ओके तापरे के पई के लिख दियो तापरे के पाखे जो दिरा जिंस से भूल जाओ खाली आई और जीरो जिंस देखो 1 * 3 = 3 3 minus of 7 मतलब 3 plus 7 पहला वैल्यू 2 I cap plus 12 J cap plus 10 K cap एटा होची तार डायरेक्शन टॉर्क रो वैल्यू ओके तो बोले मन रहला तो वेक्टर प्रोडक्ट रे किमि करा दे शॉर्टकट करा कोन करियो I J K तीनटा जको सेपरेटली लिख दो I ऊपर सबले प्लस साइन दबो J ऊपर सबले नेगेटिव प्लस माइनस प्लस तापर तीनटा जा पकरे जहा वैल्यू अछि तो जा वैल्यू लिखलो लिखला पर कोन करियो क्रॉस प्रोडक्ट करियो आई रे जदी क्रॉस प्रोडक्ट करछो आई पाखरे जदी वैल्यू अछि से दिरा कंसीडर करिबन खाली जे ओ के तापर जे रे जदी करछो जे रे दिरा वैल्यू कंसीडर करिबन ओनली आई के सेम सिम्पली करके के रे वाला ओनली आई जे रे वैल्यू कंसीडर करके क्रॉस प्रोडक्ट करियो ओके एटा अछि इजी वेला क्रॉस प्रोडक्ट करियो तापर आउ किछि इनसाइड मु तमु कहूची एंगुलर मोमेंटम तमु कहली एंगुलर मोमेंटम कलर a torque of angular momentum of a system of particles torque of angular momentum of a system of particles करिया तापरे सेडा कहला पर मु तमु आउट एग्जांपल 6.6 एग्जांपल करेबी ओके torque and angular momentum of a system of particles तो एटा जो ऑब्जेक्ट ये मन करो r2 डिस्टेंस r1 रे ये ऑब्जेक्ट আছে डिस्टेंस r2 रे ओके तो समस्त एडी मन रखो वेलोसिटी डिफरेंट हो समस्त एंगुलर वेलोसिटी सेम थाई पारे एंगुलर वेलोसिटी सेम थाई पारे बट लीनियर वेलोसिटी समस्त डिफरेंट थी r v1 = ओमेगा r1 r सॉरी ए पार्टिकल रो से पार्टिकल v2 = ओमेगा r2 समस्त लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट तो समस्त एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट ही थिबो L1 equal to कौन mvr1 v1 is different r1 is different तो समस्त एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम करे पे कौन करते हैं समस्त एंगुलर वेलोसिटी हिसाब टाइम्स इन द टॉर्क टोटल करे पे टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 बट सब जाको वेक्टर एरिया में ऐड करी एटा को सबले ध्यान रखे अछि तो मेरा टॉर्क रो डायरेक्शन जदी ओटा ऑब्जेक्ट ऊपर एपडे ओटा टॉर्क पोची टॉर्क 1 एपडे टॉर्क पोची टॉर्क 2 तो सबले जदी टॉर्क 1 को जदी हमें पॉजिटिव नबा टॉर्क 2 को नेगेटिव नबा ओके तो माने डायरेक्शन डिफरेंट तो डिफरेंट ऐसे प्रोड्यूस करे ओके तो सेंस मिल करके आंसर एता करियो टोटल किम करा जाए एंगुलर मोमेंटम टोटल और एंगुलर मोमेंट टॉर्क टोटल किम करा जाए एटा तो तमे बुक रो टिके देख परियो एटा एते इंपोर्टेंट हुआ ओके सब जाको सिग्मा माने कोन सम सिग्मा माने कोन सम ओके
तो एग्जांपल 6.5 मु कहले अब एग्जांपल 6.6 कमे एग्जांपल नंबर 6.6 एग्जांपल नंबर 6.6 से कौन लीजिए so that the angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remains constant throughout the motion. First to the question will बुझो this question right जल्दी माने कर ଗୋଟେ ऑब्जेक्ट ଅଛି जो ऑब्जेक्ट का लीनियर वेलोसिटी କିଛି ଗୋଟେ velocity ଯାଉଛି constant velocity ଯାଉଛି ଯଦି ସେ constant velocity ରେ ଯାଉଛି ଆମକୁ ଶୋ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ମାନେ ମୋର arbitrary point O होची ए arbitrary point O रे तार angular momentum is constant बोली कि हमको शो करना चाहिए हमको प्रूफ करना चाहिए फिर यदि arbitrary momentum O arbitrary point मोड O रेली और ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v रे मूव करके जाउछे constant velocity मात्र शो करना चाहिए angular momentum around the axis around an axis O is constant बतेगा शो करना अच्छे तो हम अबे कौन करछे छोटे पार्टिकल जितनी v वेलोसिटी जाउछे ओके जल्दी माने कर ऑलरेडी लाइन में ड्रा कर ली r ओके तो तारा एंगुलर मोमेंटम कितना हो ऑब्जेक्ट का मास कुछ एंगुलर मोमेंटम कितना हो r क्रॉस p हां r वैल्यू कितना है r of v और एंगल कितना है ठीक है तो r p sin थीटा मो एंगल को मैंने ली कौन पाइना सब बेले आ सब बेले डेटा वेक्टर भितर जो स्मॉल एंगल लगो से एंगल नबा ओके स्मॉल एंगल से थीटा तो मो थीटा दे rp sin थीटा r p इक्वल टू m सॉरी r p इक्वल टू m v sin थीटा ओके l इक्वल टू rp sin थीटा देन ଏବେ ଦେଖ कौन बोचे एंगुलर वेलोसिटी वैल्यू पड़ा था r mv sin थीटा सो एडी त हमु जणावी अछि जे m और v इज कांस्टेंट तो समझ में देखि शो करि परिबा कि r sin थीटा भी कांस्टेंट तो प्रूफ इज ऑटोमेटिकली जे l इज कांस्टेंट तो हम शो कर रहे r sin थीटा इज कांस्टेंट हाउ इज r sin थीटा कांस्टेंट तो हम शो कर रहे अछि ओके तो जति में हम कोन करछि जति एंगल थीटा एंगल टा भी थीटा कोन दिले तो r रो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोन आसो r sin थीटा तो r वैल्यू कितना हो r sin थीटा तो r sin थीटा कांस्टेंटली प्रूफ है r sin थीटा 80 बाय r sin थीटा जत्ते रहियो जदि म आउट पॉइंट देली आउट एंगल रे तार भी जदि हमें एडा जदि थीटा 2 तार भी जदि हमें r sin थीटा काढिया r sin थीटा ठीक है ना तो r sin थीटा इज कांस्टेंट प्रूफ है r sin थीटा इज कांस्टेंट तो हमने जब ट्रायंगल से दबा प्रूफ कर दिली तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल कौन था mv r sin थीटा तो mv was already constant कंपोनेंट गिवन थिला और r sin थीटा होची परपेंडिकुलर कंपोनेंट so constant hence l is constant proof Today proof करेगा ना angular momentum is constant how proof कर दे तो angular momentum is सर्विस सोला एडे हमने गोटे न्यू टॉपिक को आसिया और सोला angular momentum सोला रिलेशन को दे angular velocity और linear velocity एबे हमने गोटे न्यू टॉपिक को आसिया equilibrium of a rigid body तापर हम तो इतने क्वेश्चन करे तापर एडजस्ट सिस्टम में और करे ओके equilibrium of a rigid body तो फर्स्ट rigid body डेफिनेशन करना rigid body definition होची when an external force is applied to an object the intermolecular distance between the two particles of the same body doesn't change सेटा कहते rigid body तो इट हैज टू ब्रेक
जदि हम एडी फोर्स दबा एटा पोजीशन नंबर 1 अछि तब से गला पोजीशन नंबर 2 को ए भीतर मन दिला पार्टिकल A और दिला पार्टिकल आउट पार्टिकल B तब भीतर जो डिस्टेंस एठी भी थिला एठी भी जो डिस्टेंस है से सब सेम मन को क्लास इधर भी रहइबो R ओके R1 R2 तो R1 is equal to R2 तो एटा छोड़े रिजिड बॉडी फॉर एग्जांपल को बेलून नहीं गली सॉरी मोड मान करो फॉर एग्जांपल बट मो बेलून ले बेलून को फोर्स देली F दिला पार्टिकल थिला A और थिला B एटा होछ पोजीशन नंबर 1 आउट गला पोजीशन नंबर 2 पोजीशन नंबर 2 रे तो मो फोर्स देली डंप प्रोड्यूस हो A B एडी मन कर डिस्टेंस ला R1 एडी डिस्टेंस ला R2 तो R1 is not equal to R2 so balloon is not a rigid body okay so rigid body definition को मुझे पढ़ो rigid body definition is their molecular distance change over even if force is applied तो कि जब हम एक rigid body कौन बोलছি if both of its linear momentum if both of its linear momentum and angular momentum are not changing with time or equivalently, the body has neither linear momentum or angular acceleration. This means it is at equilibrium. The proper lecture jodi if the body is not in either translational momentum by linear momentum. Sorry, if the body is not either in translational force. Sorry, what proper definition was it? If force external is 0 and torque external is 0, force external 0 le kona hobo? Momentum, linear momentum constant. Torque external le kona hobo? Torque external 0 le kona hobo? Angular momentum is constant. So a body is said to be in equilibrium if the linear momentum and angular momentum is constant. Body is said to be in equilibrium. Okay. So these condition एटा को expand करी मु बोल देगा. For example, first case में हम पढ़िथिले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रे कोन जदि F external is 0 F equal to कौन था dp by dt so if F external is 0 P will be constant so F external if F external is 0 what rigid body बोलते हैं F external 0 तार angular linear momentum ना constant तो linear momentum ना constant है कौन फिर कौन सा कोचिस ये translational equilibrium रे अछि P is the constant meaning ना translational equilibrium अच्छी second case है जदि एक ऑब्जेक्ट ऊपर टॉर्क एक्सटर्नल इज 0 तार मीनिंग ना टॉर्क इक्वल टू मतलब लास्ट लेक्चर में कहते टॉर्क इक्वल टू dl by dt तो जदि टॉर्क का 0 तो L is angular momentum is constant तो angular momentum यदि constant तो angular velocity change की होगी angular velocity जदि आगे 5 rate per second ला rate 5 rate per second ही আছে तो तार angular momentum constant तार मीनिंग ना कि rotational equilibrium रे अछि ओके तो मो एटा बच्चे कोची बच्चे बुझल रहेगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मीनिंग करा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मीनिंग होचे गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर F external is 0 F external is 0 F external 0 ले कोन हो तापर मोमेंटम ना कांस्टेंट तार मोमेंटम होची कांस्टेंट तार मोमेंटम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होनी चेंज होनी इधर रेस्ट अछि और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अछि ओके तो सेकंड हम से ऑब्जेक्ट का बोलते से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अछि अब ऑब्जेक्ट में केतना तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम अछि ऑब्जेक्ट में केतना तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम अछि
ऑब्जेक्ट ऑफ केतल काय हम से रोटेशनल इक्विलिब्रियम আছে যেতল পাবে টর্ক এক্সটার্নাল 0 টর্ক এক্সটার্নাল 0 হইলে কোন হবে তার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম উইথ রেসপেক্ট টু টাইম চেঞ্জ হনি তো তার ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হচ্ছে ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଟା କହିବା ରୋଟେଶନାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ରେ ଅଛି ବୋଲି ଓକେ तो এই দুইটা কেস রে যদি সে গোটা অবজেক্টটা both ট্রান্সলেশনাল ইকুইলিব্রিয়াম রে আছে আর रोटेशनल ইকুইলিব্রিয়াম রে আছে তাকে কোয়া হচ্ছে সে ফুললি ইকুইলিব্রিয়াম রে আছে ইকুইলিব্রিয়াম অফ এ রিজিড বডি এটা ইকুইলিব্রিয়াম অফ এ রিজিড বডি ओके तो ଏବେ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सरला ଆଉ इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम सरला ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ପାର୍शियल इक्विलिब्रियम ଆଉ ଗୋଟେ कंडीशन ଅଛି पार्शियल इक्विलिब्रियम पार्शियल इक्विलिब्रियम को मीनिंग करो पार्शियल इक्विलिब्रियम को मीनिंग मुझे जदि ଗୋଟେ ऑब्जेक्ट ता if the object is लिखि दो फर्स्ट either ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम or either of translational equilibrium or rotational equilibrium is not present तर मीनिंग होचे ए बीटारो को गोटे दिन से नाही तार ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं फॉर एग्जांपल लेकर तो मस्त बुझ परियो जदी मोडा ऑब्जेक्ट मोटे रॉड नहीं होचे यदि मो रॉड नहीं होचे रॉड तक हमें फोर्स करछनी ओके एपिडर्मल फोर्स देता तो ये टॉर्क कपड़े प्रोड्यूस करियो तो आर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अछि कि नहीं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंपेन फोर्स सेम डायरेक्शन में पड़ुछि फोर्स दीटा जाक सेम डायरेक्शन में पड़ुछि तो से किछ ना किछ गोटे एक्सप्लेनेशन दबो ताको सेमे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं बट टॉर्क इज 0 तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अच्छी टॉर्क है कम 0 तो मैंने जति क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होचे सेति की एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की प्रोड्यूस होचे ओके सेति रोटेशनल इक्विलिब्रियम अच्छे बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं एटा होचे पार्शियल इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 1 आ गोटे कंडीशन मु कहूची देखा एटा होचे गोटे ऑब्जेक्ट मन करा ऑब्जेक्ट को एप्रोड गोटे फोर्स मिलची आ गोटे फोर्स मिलची एप्रोड ए ऑब्जेक्ट ऊपर लीनियर बट ट्रांसलेशनल जदी फोर्स देखिबा एफ एक्सटर्नल कोन हो 0 को मैंने दिले ऑपोजिट डायरेक्शन अछि ओके बट जब हम रोटेशनल देखिबा दीटा तो ऑपोजिट डायरेक्शन अछि माने कि गोटे ये भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करछि टॉर्क सॉरी ये भी एंटी क्लॉकवाइज होची टॉर्क ये भी एंटी क्लॉकवाइज होची टॉर्क तो टॉर्क एक्सटर्नल is not 0 तो एरो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अच्छी ए दीटा कंडीशन को कोन कहजे पार्शियल इक्विलिब्रियम रो दीटा एग्जांपल ओके तापरे आउट टर्म वो इंट्रोड्यूस करछि कपल रो मीनिंग कोन एडा जो पार्शियल इक्विलिब्रियम रो सेकंड कंडीशन ना आपको कपल भी कहजे कोन में कपल कहजे कपल रो मीनिंग होचे दीटा फोर्स दीटा सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में होते दीटा सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते जहां द्वारा कि सिर्फ रोटेशनल मोशन ही प्रोड्यूस करते जहां द्वारा कि सिर्फ खाली टॉर्क प्रोड्यूस करते टॉर्क को गोटे रोटेशनल मोशन नो ट्रांसलेशनल मोशन ओनली से टॉर्क प्रोड्यूस करते जहां द्वारा कि ओनली रोटेशनल मोशन होते ताकू कहजे कपल ओके ए पेयर ऑफ forces of equal magnitude but acting in opposite direction with different lines of action are known as couple okay a couple का टॉर्क पे रहा आई होप हमें क्लियर हैला couple linear rigid body रे rigid body रे इक्विलिब्रियम केमि प्रोड्यूस करा जाए नेक्स्ट में तो मु कहबो अछि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स आज रो लास्ट टॉपिक
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स तापर मु तुमको दीटा क्वेश्चन करेबे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर दीटा क्वेश्चन करेबे तापर हमें कंप्यूटर लेक्चर देबे ओके तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कौन सी भी जिनस में जदी मोमेंट कैरियर अच्छे तो कौन कर अच्छा मु से जो जो जिनस में मोमेंट कैरियर अच्छे से जिनस को हमें डिस्टेंस सहित मल्टीप्लाई करिया फॉर एग्जांपल जदी हम मोमेंट ऑफ फोर्स कैरियर अच्छे पोटेड आज ऑब्जेक्ट जब हमें फोर्स क्वेश्चन है तो इधर मोमेंट ऑफ फोर्स कैरियर हो गया f into r r डिस्टेंस तो इधर मोमेंट ऑफ फोर्स तो जदी हम मोमेंटम कैरियर अच्छे जदी गोटे ऑब्जेक्ट ता p मोमेंटम रे जाउचे तार को मोमेंटम कैरियर अच्छे p क्रॉस r सेटा होछ तार मोमेंटम जाको कहले एंगुलर मोमेंटम ओके तो एडी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कोन कहूची प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम से हमें कोन पढ़िया फॉर एग्जांपल गोटे मो ऑब्जेक्ट रेडी होची ऑब्जेक्ट रेडी होते फलक्रम ऊपर रेस्ट अछि ओके तो एप्रेड ता ऑब्जेक्ट पर फोर्स पड़े f1 और एटार डिस्टेंस होचे d1 आर डिस्टेंस होचे d2 एप्रेड फोर्स पड़े f2 तो फलक्रम जगो ऊपर गोटे रिएक्शन पड़े r ओके प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ना डेफिनेशन रे कोन इन्वॉल्व अछि इफ द ऑब्जेक्ट is in equilibrium if the object is in equilibrium r is equal to f1 plus f2 কথা নাই বা এটা আমরা কোন করবে r minus f1 minus f2 is equal to 0 if the object is in translational equilibrium okay তারপরে if the object is in rotational equilibrium में torque consider करिए तो torque कितना पड़ती f1 d1 what direction में पड़ती इड़ा anti clockwise ये कौन डायरेक्शन में पहुंचे torque clockwise सबसे मन का anti clockwise को पॉजिटिव लिया जाए तो f1 d1 is equal to f2 d2 सेटिफाइंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम है एदा हम कौन लिख रहे हैं f1 d1 minus f2 d2 equal to 0 ओके तो ए दुटा इक्वेशन को लेके हमें बहुत सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर परिया ओके एडा ही कोच प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट तापर हम तुमको गुड एग्जांपल सेट दोछि एग्जांपल हम क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से तीन कोच जदी दुटा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम अछि ताको लेके हम कोन फार्मूला डिराइव कर पाए एक्सिस इक्विलिब्रियम से कोन फार्मूला रोटेशन इक्विलिब्रियम से कोन फार्मूला ये फार्मूला डिराइव कर देगी पहले हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ओके तो अब एग्जांपल दिया एग्जांपल करिए हमें एग्जांपल नंबर 6.7 ओके एग्जांपल नंबर 6.7 से कौन बोलছে so that the moment of a couple doesn't depend on the point about which you take the moment तार मीनिंग कोन जदी मन कर ऑब्जेक्ट अछि एरा छोड ऑब्जेक्ट मन कर a b so the moment of a couple माने dita force आगर बोलछि f doesn't depend on the point about which you take the moment जदी हमें a point about जदी हम मोमेंटम करे किबा a point about तार मोमेंटम करे किबा a point about मोमेंटम करे सब पॉइंट रे तार मोमेंटम कांस्टेंट रहइबो ओके सब मोमेंट रे तार कांस्टेंट रहइबो किमि काइडिया जदी मन करो आर्बिट्ररी पॉइंट नेछि o तार डिस्टेंस पॉइंट a रु r1 पॉइंट b रु तार डिस्टेंस अछि r2 ओके तो जदी मन करो आर टोटल कपल इक्वल टू कोन हबो f r2 गोटे होची एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करछि कपल माने कोन धीरे धीरे फोर्स सेम अछि एंटी क्लॉकवाइज तो छै ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होछि ये प्रोड्यूस करछि एप्पल साइड एंटी क्लॉकवाइज ये भी प्रोड्यूस करछि एंटी क्लॉकवाइज बट धीरे धीरे f ऑपोजिट डायरेक्शन अछि तो एटा जदी हम f मोशन ये कोन हबा माइनस
R torque केते हबो F R2 R torque केते हबो minus F R1 सॉरी तो टोटल कपल इक्वल केते हबो F सबले मन रखो टॉर्क इक्वल टू फार्मूला कोन था R plus F तो R टा को सबले फर्स्ट रखियो R2 minus R1 cross F के एबे हमें वेक्टर आउथर आस्ता देखो जदी मान करो तमे सब एडा जान के तीटा वेक्टर एडा वेक्टर और एडा वेक्टर ए तीटा वेक्टर जदी मु सम करी सबले वेक्टर ता तार मछी आसे ओके तो एठी जदी मु ए वेक्टर टा को R2 वेक्टर को ए डायरेक्शन अछि एडा ए डायरेक्शन अछि ओके तो एबे मु जदी R1 वेक्टर टा को एठी प्लेस कर ए वेक्टर टा को एठी नहीं प्लेस कर R1 वेक्टर टा को एठी नहीं प्लेस करिमो ए एटा को एठी मैग्निफाई करी देखो छी पुनी देखो बच्चा बुझ ट्राई करो एटा होची मन करो R1 वेक्टर ओके एटा होची AB वेक्टर ओके एटा होची मन करो AB वेक्टर आउटे वेक्टर होची R2 वेक्टर R2 वेक्टर ठीक है जदी गोटे वेक्टर का अपन पैरेलली नहीं कोई पॉइंट रखे तार वैल्यू सेम ही रहे तो एटा को पैरेलली सीधा नहीं के एड रखली एटा को सीधा नहीं के एड रखली ओके आ कुछ भी करनी तो एटा हम कोन जाना पड़छ R1 वेक्टर प्लस AB इज इक्वल टू R2 वेक्टर ओके तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर तो R2 माइनस R1 को मुका लिख परिबेडी AB वेक्टर cos F इज इक्वल टू कपल अब एबीडा सब जगह कांस्टेंट रहे तो हेंस प्रूव एबीडा सब जगह कांस्टेंट ही रहे ना तर लेंथ हेंस प्रूव कपल का कौन से पॉइंट पे डिपेंड करे खाली डिपेंड करे तर लेंथ ओके आउट एग्जांपल आज लास्ट एग्जांपल ले जो एग्जांपल नंबर 6.8 क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो a metal bar 70 centimeter long and 4 kg in mass supported on two knives ड्रॉ करो सिंपली कोची और लेंथ कितना 70 centimeter long and 4 kg mass okay supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end एडा जो knife 10 centimeter है एडा जो knife into 10 centimeter okay at 6 kg load is suspended at 30 centimeter from one end a into 30 centimeter है और 6 kg load okay suspended from one end find the reaction of knife edges तो second question uniform bar पे दीजिए पूरा होची 70 centimeter तो इट विल बी 5 centimeter इटा 35 centimeter हमु से कोन होची जो रिएक्शन दीटा नाइफ दूची R1 आर स्टेशन पे रखे ये होची इक्विलिब्रियम रे अछि और फुल रो मास के दे देछि 4 kg 4 kg से बोलता सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट अछि तो एपडे भी ये मन करा 4 kg रो गोटा ऑब्जेक्ट लेवल ही बिहेव करियो ओके एपडे डाउनवर्ड फोर्स पड़छि एपडे गोटे डाउनवर्ड फोर्स पड़छि ओके सो नाउ लेट्स assume it is in translational equilibrium assume what is equilibrium अछि it is in translational equilibrium तो translational equilibrium वाला मीनिंग और ऊपर आड़े डेटा फोर्स पड़ुछि R1 plus R2 is equal to एपड मानक डेटा ऑब्जेक्ट रो वेट होछि W1 एटा होछि W2 W1 plus W2 ओके तो R1 plus R2 रो वैल्यू काढी परिबे हम W1 रो वैल्यू केते 6 into 9.8 plus W2 रो 4 into 9.8 तो R1 plus R2 रो वैल्यू केता हैला 98 एटा होछि रिएक्शन नंबर 1 R1 plus R2 रो वैल्यू होछि 98 तापरे एटा होछि it is also in rotational equilibrium
तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम আছে তার মিনিং না टॉर्क কেন আমি কাটিয়া टॉर्क কেন r1 ডাইরেক্ট কো মোশন প্রডিউস করছি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ w1 টা r1 টা কোন প্রডিউস করছি ক্লকওয়াইজ সরি ক্লকওয়াইজ r1 ক্লকওয়াইজ প্রডিউস করছি টর্ক লস w1 টা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ r2 টা ये भी एंटी क्लॉकवाइज ओके तो W1 into 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को हम ऐसा लिखिए क्या लिखा एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव W1 पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर को हम ऐसा लिखिए मीटर एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव R2 भी कौन प्रोड्यूस करछि एंटी क्लॉकवाइज R2 केते डिस्टेंस अछि 25 सेंटीमीटर R2 रो वैल्यू केते अछि is equal to R1 कितने डिस्टेंस है R1 से भी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है R1 ओके तो एटा को हमें सॉल्व करे W1 ର वैल्यू भी हम जाना আছে 6 into 9.8 into 0.05 plus R2 0.25 minus R1 0.25 is equal to 0 तो ये R2 minus R1 रो वैल्यू प्रॉपर আছে R2 minus R1 रो वैल्यू केते 11.76 न्यूटन तो सॉल्व कराओ इक्वेशन नंबर 2 तो हमारे भी दीटा इक्वेशन अछि कोन R1 plus R2 equal to 90 और कोन R1 minus R2 is equal to 11.76 एडी इक्वेशन भी तो हमें सॉल्व करिया R1 रो वैल्यू आसीबो 54.88 न्यूटन और R2 रो वैल्यू आसीबो 43.12 न्यूटन ओके तो आज हमें कौन कौन पहले हम शॉर्ट समरी को कह दोची हम कवर पढ़ला आज बहुत सारा टॉपिक आज कवर करले फर्स्ट हमें पढ़ले एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी p इक्वल टू ओमेगा r तापरे हम अल्फा वैल्यू पेड़े सिखला अल्फा वैल्यू में एंगुलर एक्सेलरेशन वैल्यू ओमेगा बाय t अब हमें टॉर्क विषय पढ़ले टॉर्क किंदी प्रोड्यूस करছে তার डायरेक्शन कपड़े किंदी कैलकुलेट करे तापर हमें एंगुलर मोमेंटम विषय पढ़ले एंगुलर मोमेंटम पढ़ले वर्क डन बाय टॉर्क किंदी वर्क डन बाय टॉर्क केडे वर्क डन बाय टॉर्क इक्वल f पार d थीटा पावर बाय टॉर्क इक्वल f पार ओमेगा अब एग्जांपल सॉल्व करथिले तापर हमें पढ़ले इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी काउ का इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी चाहो करे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जे दी तरह इक्विलिब्रियम है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम इन तरह से जब f एक्सटर्नल और tau एक्सटर्नल बोथ आर जीरो तर पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ले पार्शियल इक्विलिब्रियम माने का either of the equilibrium is not present तो गोटे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नाही तापर हम बोले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम तार तीन दीटा दीटा फॉर्मूला डिराइव करियो तापर हम एग्जांपल कर तो नेक्स्ट क्लास हमें पढ़िया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी लास्ट टॉपिक हमें कवर करिबा तो टिल देन स्टडी वेल थैंक यू